Good evening everyone. Welcome to Commerce Canpit Odisha. So काली हमें टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी जाई डिस्कस करथिलु. Now we'll start with exchange. ठीक अछि. तो exchange माने कोन? When two individuals bring their products for trading purpose in the market, such act is called as exchange. माने कोन? आगरे barter system होथिला. वर्तमान कोन? Everything is monetary system. ठीक अछि. Exchange माने कोन? जहा किछि भी आम पाखरे अछि, आमे सेडा कोन? सेम वर्थ रो आइटम सहित जेतळो कोन? एक्सचेंज करियो. एक्सचेंज करू माने कोन? जावले तमे जहा भी दबो एंड से कोन? सेम वर्थ रो आइटम तुमको दबो, दैट्स कॉल्ड एक्सचेंज. In olden days, goods were exchanged for goods under the barter system. आगरे कोन होथिला? Barter system होथिला, but nowadays कोन होची? Everything is monetary. ठीक अछि. Then आसे हमर कोन हमर distribution. Distribution means sharing of the income among the factors of production. Factors of production काली कहिथिली कोन थिला? Land, labor, capital and machinery किंबा organization किंबा कोन entrepreneur जहां किछि भी ना जागो. So distribution means sharing of the income among the factors of production. The total income which is generated by selling of these goods and services in the market must be distributed among the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. ठीक अछि. से कोन कहूची ना जहां किछि भी हमरो आमे कोन सिखिलु ना हमर अमाउंट जहां किछि भी अछि, इनकम जहां किछि भी अछि सेडा हमें कोन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रे डिस्ट्रीब्यूट करिया किबा एपोर्शन करिबा. बट सेडा को फॉर्म रे हम एपोर्शन करिया ना रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रेंट कोडा पई लैंड पई, वेजेस का पई लेबरर्स पई, इंटरेस्ट का पई कैपिटल. ठीक अछि. कैपिटल पई आ प्रॉफिट इज फॉर एंटरप्रेन्योर. बुझला ना नहीं? तो इनकम डा हमें कोन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भितरे एपोर्शन करलो ना नहीं. तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो रेंट का पे लैंड पे, वेजेस का पे लेबरर पे, इंटरेस्ट इज फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट इज फॉर एंटरप्रेन्योर. ठीक अछि. देन आसे हमर कोन वैल्यू. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन रा हमर टू टाइप्स जहा किछि भी अछि सेडा में पर डिस्कस करिया. नाउ वी विल सी वैल्यू. ठीक अछि. वैल्यू रा मीनिंग कोन? वैल्यू इज ऑफ टू टाइप्स, यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. ठीक अछि. वैल्यू रा बेसिक मीनिंग रा हमें जानछु. स्टैटिस्टिक्स रे पढ़थु, अकाउंटिंग रे पढ़थु, लॉ रे पढ़थु. ठीक अछि. बट एक्सचेंज माने वैल्यू जहा किछि भी अछि सेडा टू टाइप्स कोन ना यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. Use value is the capacity of want satisfying power of any commodity, or in other words, it's the utility of the commodity. The use value of the water is its ability to quench thirst. बुझला ना? एडा रो तुम क्वेश्चन आसी परियो. प्लीज मार्क इट इंपोर्टेंट. ठीक अछि. काहेगी तुम यूज वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू रो मीनिंग बुझिया पड़ियो हैला. जेतो एडा टिके इंपोर्टेंट, वी विल एलिब्रेट दिस. ठीक अछि. यूज वैल्यू रो मीनिंग कोन ना कैपेसिटी ऑफ वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी. प्लीज अंडरलाइन capacity of want satisfying power of any commodity. Want satisfying power of any commodity. See example भी देछि देखो हमगु water रो. water रो ability कोन? thirst quench करियार माने thirst reduce करियार. food रो ability कोन? जहा किछ भी हमरा hunger eliminate करिवार. money रो ability कोन? expenses match करिवार. ठीक अछि. किनेबा पावर हमगु दबार. तो से कोन कहूछ देखो capacity of want satisfying power of any commodity. जदि तम ए क्वेश्चन आसीबो, your answer will be use value. ठीक अछि. use value डा please put it in braces. use value डा is the capacity of want satisfying power of any commodity. ठीक अछि. Then आसे हमरा exchange value. Exchange value of a commodity is its ability to be exchanged for other commodities. Underline करो. Ability to be exchanged for other commodities. तो एक्सचेंज वैल्यू माने कोन? इजीली हमें बुझिया पे कोन अछि 100 रुपीस रे हमें कोन करि परिया जहां किछ भी 100 रुपीस भितर हमर आइटम्स रो वैल्यू जहां भी अछि सेडा हमें किने परिया. सो दैट्स एक्सचेंज वैल्यू. ठीक अछि. बट टैंजिबल आइटम्स रो सबले कोन आसीबो? यूज वैल्यू आसीबो. बुझिला ना कोन डाउट अछि? देन आसी हमर कोन? प्राइस. प्राइस माने कोन? एमआरपी ऑब्वियसली. कोन देगी हमें से जिंसडा किने परिया. Price of a commodity is the amount of money which is exchanged for 1 unit of a commodity. Please underline. Amount of money which is exchanged for 1 unit of a commodity. Gutte unit of commodity किनिया पे हमको केते amount payment करिया पड़ुची. That's the price of that particular commodity. The price will be obviously different from commodity to commodity. ठीक अछि. Is the exchange value of the commodity in terms of money. देखो exchange value and price are interchangeable. ठीक अछि. से सेडा का कहूची एडी.
in terms of another commodity may or may not change even if the price of the commodity changes. एटा बहुत अनइम्पोर्टेंट लाइन ला जेता हम टिके देखुछु तो कवर करछु. For instance, if both prices get doubled, the exchange value between the two commodities will remain unchanged. तो सी कोन कहूची जदि तम पाखरे गोल्ड बिस्केट अछि हैला ता इक्विवेलेंट रो तम पाखरे सिल्वर अछि हैला सिल्वर गुडा हाईएस्ट क्वालिटी रो सिल्वर 0.99 सिल्वर जहा भी कहूछु दैट्स द हाईएस्ट क्वालिटी सिल्वर अवेलेबल इन इंडिया. तो सेडा जेतोला हम एक्सचेंज करछु मनरो गोल्ड रो इंडिविजुअल प्राइस भी बढ़ियाला सिल्वर रो इंडिविजुअल प्राइस भी बढ़ियाला इवन इफ से दीडा जिंस रो प्राइस बढ़ियाला से दीडा रो एक्सचेंज वैल्यू डिफरेंशिएटेड हबो कि नाही प्यूरिटी हिसाब रे जदि मनरो 22 कैरेट गोल्ड को वी आर एक्सचेंजिंग 0.99 सिल्वर जहा की प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिल्वर इन इंडिया. तो सेडा रो एक्सचेंज वैल्यू केबेले डिफरेंशिएट हबोनी इवन इफ द प्राइस चेंजेस. तो से जिंसडा बुझोच इट्स अ वेरी डीप कांसेप्ट एबे एते डीप जिबा दरकार नै बुझिला लाइन रो मीनिंग दा. अच्छा then we'll go with micro and macro distribution. Micro and macro distribution रो आगा आसी हमर कोन micro and macro economics. तो आमे कोन distribution रो मीनिंग दा बुझिलु. Distribution रो मीनिंग कोन income दा apportion करियारो among the factors of production. But what do you mean by micro and macro distribution? सेडा हमें देखिया है. Micro distribution रो मीनिंग कोन micro distribution is nothing but pricing of factors of production. It means it explains how the price per unit of land is determined. In the same way how the price per unit of labor and capital etc is determined. ठीक अछि. तो आमे कोन देखिलु ना आमे देखिलु कोन इनकम ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भितरे एपोर्शन केमती करबा हैला सेडा सब कोड रे कवर हबो आमे कहूचु ना माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रे कवर हबो. बट मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रे कोन कवर हबो देखो तापर आमे कंपैरिजन दा देखिया. Macro distribution रे कवर हबो हमरो शेयरिंग ऑफ द टोटल नेशनल इनकम अमंग द टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक अछि. अच्छा दीरा जगह रे हमरो टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आगा आछि त हमें देखिया कोन को जिंसो कोडी एपोर्शन हो. माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन रे अंडरलाइन करो pricing of factors of production. This is the important line here. Pricing of factors of production. एडी अंडरलाइन करो sharing of the total national income among the total factors of production. Sharing of the total national income among the total factors of production. बुझिला. तो माइक्रो एंड मैक्रो रे डिफरेंस कोन हैला बहुत सानो बहुत की पॉइंट अछि ए भितरे बहुत स्लाइड डिफरेंस अछि बहुत आराम से बुझि पारियो. तो से कोन कहूची 2000 जगह रे हमर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आगा आसुची मन नै. But factors of production रे फर्स्ट पार्ट ता कोन कहूची ना ईच इंडिविजुअल आइटम गोटे इंडिविजुअल को देखिला आलको ईच इंडिविजुअल आइटम को किन हमें एपोर्शन करिया किमिति डिस्ट्रीब्यूशन करिया दैट कम्स अंडर माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन. बट नेशनल हिसाब रे माने नेशनल इनकम हिसाब रे ऑन द होल गोटे इकोनॉमी गोटे कंट्री हिसाब रे जेतोळ देखुचो सेडा आसियो केतोळ मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन भितर. ठीक अछि. इंडिविजुअल को देखुचो सेडा आसियो माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन. नेशनल इकोनॉमी टोटल इकोनॉमी किबा टोटल कंट्री को देखुचो सेडा आसियो कोन मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन अंडर. तमे गोटे पॉइंट एडे लिखि दे पारियो कोन जा भी लिखि दियो माइक्रो individual sense and macro कौन इकोनॉमी और कंट्री बेसिस. इकोनॉमी और कंट्री बेसिस. ठीक अछि. अच्छा सी आउडे कोन देछि ए भितरे ना हमें जेतोळ एडा बुझिबो जेतु एडा कोन गोटे पूरा इकोनॉमी किबा पूरा कंट्री हिसाब रे देखुछु तो को कांसेप्ट आछि ए भितरे एम्प्लॉयमेंट आछि इनकम आछि प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड. तमे देखि पाछो ए चारटा जागो जिंसो गोटे इकोनॉमी हिसाब रे आगा में करि पारे गोटे इंडिविजुअल हिसाब रे केबेले काउंट करि पारियानी. बट एडी जहा भी से करछ कोन ना रेंट देखो मु कोन पे एडा कहूची ना एडा क्वेश्चन आसुची यू हैव टू आइडेंटिफाई रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट सेडा कोन इंडिविजुअल बेसिस रे भी हे पारियो पूरा कंट्री बेसिस रे भी हे पारियो जेतो दीडा जगह हे पाची दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर व्हाट माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन. बट जोड़ा खाली कंट्री हिसाब रे हे पारियो दैट कम्स अंडर व्हाट मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन. बुझिला आंसर करि पारियो. देन नेक्स्ट देखो कंजम्पशन. व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन. काली कहितली कस्टमर एंड कंज्यूमर डिफरेंस टा कहितली ना नहीं. कस्टमर माने की जेगी गुड्स परचेज करची बट कंज्यूमर इज द पर्सन हु एक्चुअली कंज्यूम्स इट हु एक्चुअली यूजेस इट. ठीक अछि.
तो इट्स एन एक्ट टू यूज द गुड्स और सर्विसेज टू सैटिस्फाई द वांट्स ठीक अछि बेसिक माने आइडिया से कहूची then kono consumption is typically defined as the final purchase by an individual that are not investments of some sort. In other words, when you buy food, clothes, airplane tickets, a car, etc., that's consumption. ठीक अछि से कोन कहै छै देखो फूड जहाँ भी जदि तमे इंडिविजुअली किनछ सेडी जाइगी किनछ तो कोन तम पे तमे किनियो टिकट जहाँ भी अछि तम पे तमे किनछ सेडी जाइगी सो इट्स ऑल कंजम्पशन से बेसिक एग्जांपल्स को होची माने मो ए जिंसडा गो थ्रू कोन पे करोची ना आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम माने जेतरो हमें अलग यूनिट्स को जेतरो जेबो आई मेक यू ड्रॉ चार्ट्स ठीक अछि सेठी तमे चार्ट्स ड्रॉ करियो जेति की खाली इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि सेति की आगे सेठी मेंशन करियो बाकी सब तम कांसेप्ट निजे ब्रश अप करियो ठीक अछि जेमति की हमें ए कंजम्पशन रे केमिति हमें पढुचु हैला गोटे पैराग्राफ अछि किन हमें पढचु ना फर्स्ट से कहै छै कोन बेसिक डेफिनेशन त ट्रेंड रहै छै कोन बेसिक डेफिनेशन इमति नै कि तमे कंजम्पशन रो मीनिंग जानि नली कहि बुझछ ना पिलाने सुन टिके इमति नै कि कोन कंजम्पशन रो तमे मीनिंग जान चली कहि बट जिंसो कोन ले कहले से बेसिक मीनिंग ना जतळ दोछि तमे सेडा आइडेंटिफाई करी कि से वर्ड ता सेडे लिखि पारियर अछि से की वर्ड ता सेडे लिखि पारियर अछि दैट्स व्हाई वी आर गोइंग थ्रू द डेफिनेशंस बुझिला एबे जदि मु नॉर्मली कहि देबी इट्स अ एक्ट टू यूज द गुड्स और सर्विसेज टू सैटिस्फाई द वांट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इट्स द कंजम्पशन एडा द कंजम्पशन वाली तुम आइडेंटिफाई करि पारियर अछि दैट्स व्हाट इज इंपोर्टेंट ठीक अछि तो कंजम्पशन रो मीनिंग हमें जान लो एबे देखिया कोन ना थ्रू कंजम्पशन द कंज्यूमर डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एडा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करो इंपोर्टेंट इन द सेंस लास्ट 5 सेशंस रे जदी गुड थरे भी आछि आई विल आस्क यू टू मेंशन दैट ठीक अछि consumption the consumer destroys the utility of the commodity माने कोन जेतोळ गोटे प्रोडक्ट कंज्यूम हेला जेतोळ गोटे प्रोडक्ट एक्चुअली यूज हेला तार सैटिस्फैक्शन से दिन आगे सरियो हां ना नहीं गोटे रसगुल्ला तमे आनचो से दिन खाइलो तार यूटिलिटी से दिन आगे सरियो ना नहीं ठीक अछि तो ए सेंटेंस रो मीनिंग होची सेडा सो व्हाट डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी कंजम्पशन डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी ठीक अछि क्लियर the utility was created by the producer through production create किए करला producer but end किए करला consumer ठीक अछि then आछि हमरा देखो definition of economics रे the thing you have to remember is co-definition किए देछ ठीक अछि sometimes they ask it in maths the following or sort things like that but एते भी important नहीं खाली देखो कोन को डेफिनेशन के देछि एंड से कोन कहया चाहछि तो एडी हमर कोन आछि चारटा जिंस आछि वेल्थ डेफिनेशन वेलफेयर डेफिनेशन स्कैसिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशन तो अंडरलाइन करो जेति के कहछि सेति के अंडरलाइन करो एडी अच्छा इंपोर्टेंट पॉइंट एडी होछ कोन हमर एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एटा गुटे जिंस एडी अंडरलाइन करिया पे अल्टीमेटली वेल्थ डेफिनेशन भितर से कोन कहउची तमे खाली मन रखो को डेफिनेशन दा के देची एडी देखो से लिखा हैची इट्स मोस्टली एसोसिएटेड विथ जेबीसी एंड एडम स्मिथ the name of the book by Adam Smith is an inquiry into nature and cause of wealth of nation ए सब जिंस किछ दरकार नै जिंस कोन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के हमें जान लो एडी से कोन कहया चाहछि सेडा हमें जानिबार अछि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड वेल्थ अच्छा तम क्वेश्चन पैटर्न दा केमति आसीबो एडी मु कहि दोछि जिंस होछि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड वेल्थ से कहिबो ए डेफिनेशन ए जिंसडा को डेफिनेशन रे को आइछि सेडा से पचरे ठीक अछि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स विथ वेल्थ एडा अंडरलाइन करियो बस ठीक अछि ए दीडा पॉइंट जहां भी अछि सेडा वेलफेयर डेफिनेशन पाखरे लिखियो हैला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स विथ वेल्थ अच्छा तुम इजीली आइडेंटिफाई कर पारियो एडा वेल्थ डेफिनेशन काहे गेले वेल्थ वर्ड ता रिपीट होछ तो क्वेश्चन जिमती आसीबो सेमती हमें थॉट प्रोसेस ता रखिबा ठीक अछि एडा के कहछि ना वेल्थ डेफिनेशन पाखरे लिखि दियो JB and Adam Smith. So Adam Smith is the father of economics. ठीक अछि एटा होछ हमर वेल्थ डेफिनेशन किछि नै इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ से कहया चाहछ देन आछि हमर देखो वेलफेयर डेफिनेशन ओनली द पॉइंट्स व्हिच आर रेलेवेंट आर डिस्कस्ड सुनो वेलफेयर डेफिनेशन के देला अल्फ्रेड मार्शल के देछि
Alfred Marshall. He was the follower of Adam Smith. माने ये कि Adam Smith रो student. से कौन कहूची ना economics is one side study of wealth. Last point टा देखो सेटा underline करो first. Economics is one side study of wealth. On the other, more important side is a part of the study of man or the welfare of the man. देखो wealth रो अधिको से welfare टा consider करची. That's why this comes under the policy of welfare definition. बुझला किए कहला एटा Alfred Marshall. Economics is a study of mankind in ordinary business of life. It examines that part of the individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Definition तो मन रखिया दरकार नहीं. मु कहूची कोन अल्टीमेटली जे भी अल्फ्रेड मार्शल अछि से कोन कहया चाहूची ना वेल्थ रो अधिको ह्यूमन वेलफेयर इज इंपोर्टेंट. माने गोटे पर्सन रो माइंडसेट से भलो अछि ना नै तार वेलबीइंग अछि ना नै इमती नाही कि सी जदी रिच हेछि इमती नाही कि से खुशी रहि पारि वाली को हैला. Is he still happy? Is he still happy even if he is not having anything? Is he happy if he is also having everything? Everything जदी थाई कि भी से जदी खुशी नाही तो सेटा वेलफेयर वाली हमें कहि पारियानी. So welfare definition कौन कंसंट्रेट करची wealth रो अधिको welfare को इंपोर्टेंस दोची. So this definition is given by Alfred Marshall. अच्छा गुड जिनस मन रखो जे क्रिटिसाइज करथियो से आगा और डेफिनेशन दबो काहेंगी जे जण जा झगड़ा लागे से कह एडा खराब अछि तो से कोन पचरे हो ठीक अछि तू सतटा को तू कोन भाबछ सेडा को से पचरे तो एडा के क्रिटिसाइज करला लायनेल रॉबिन्स. इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय लायनेल रॉबिन्स. एबे असला देखो स्कैरसिटी डेफिनेशन. स्कैरसिटी डेफिनेशन अच्छा वेलफेयर रे कोन आछि हमरो वेलफेयर वर्ड टा तुम केमती काउ पचारि पारियो ऑल गुड पचारि पारियो ऑल गुड इज एवरीथिंग गुड तो ऑल गुड इज मैचिंग विथ अल्फ्रेड. ठीक अछि इमती मन रखि पारिया कि वेलफेयर डेफिनेशन इज गिवन बाय अल्फ्रेड. अच्छा मनरो गुडे पूरा गुडे बड़ ट्यूशन की जा किछि भी अछि सेडा अबैंडन हेला गुडे दी तीनटा पिल्ला जे भी अछंदी सेडे अछंदी थिलाळो कोन हला सडनली गुडे लायन आसिले कोन करिया समस्त खाइ दो. Obviously it's a sad story but जिनस सोना समस्त खाइ देबो खाइ देले कोन होबो सेडी स्कैरसिटी होबो अभाव होबो. तो स्कैरसिटी डेफिनेशन ता के दैछि हमरो लायनेल रॉबिन्स. ठीक अछि आओ वेल्थ माने कोन पैसा मनी. एडम स्मिथ जा भी अछि माने गुटे वर्ड अछि कोन आमदनी something like that. आ गुटे ये रे भी अछि कोन इनकम रिलेटेड वर्ड अछि आमदनी something like that. So Adam and Amdani is somewhat matching. ठीक अछि इमती मन रखेगी wealth सहित Adam Smith and scarcity सहित Lionel Robbins, welfare सहित Alfred Marshall. ठीक अछि देन आसे हमर देखो growth definition. growth definition भितर कोन आछि Samuel underline करो J.M. Keynes and P.A. Samuelson. J.M. Keynes and P.A. Samuelson. अच्छा फर्स्ट मु चारटा जे डेफिनेशन के देछि सेडा कहूची देन से भितरे जिस्टक डिस्कस करिया. J.M. Keynes and P.A. Samuelson. अच्छा ग्रोथ का हो पचरिए तम पेरेंट्स को आसी पचरिए का विषय पचरिए तम को केते ग्रोथ करलानी तो ग्रोथ डेफिनेशन इज गिवन बाय Samuelson. सबोळे पेरेंट्स को तांको सन विषय पचरंती ऑब्वियसली डॉटर भी बट कोन सन जनरली सन. तो ग्रोथ डेफिनेशन इज गिवन बाय P.A. Samuelson and Keynes. तो देखो वेलफेयर एंड वेल्थ डेफिनेशन ना हम डिस्कस करलु. स्कैरसिटी डेफिनेशन रे कोन कहूची देखिया. अच्छा स्कैरसिटी डेफिनेशन रे से कहूची कोन स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस माने से कहूची कोन एवरी ह्यूमन बीइंग लिव्स टू मीट हिज एंड्स माने जहा किछ भी बेसिक जिंस पय एवरी ह्यूमन बीइंग फर्स्ट स्ट्राइव करियो से रिच होबनी कि वेलफेयर बेसिक डिराइव करिवनी. फर्स्ट थिंग व्हिच ही क्रेव्स फॉर जहा किछ भी से डिराइव कोन करियो चेष्टा करियो बेसिक नीड्स जहा भी गोटे हाउस हैला खाया पई आ कोन बेसिक इनकम आ पिंधिया पे क्लॉथ्स ए सब कोन स्कैरसिटी नीड्स. तो से कोन कहूची एंड सब स्कैर्स मीट करिबाडा होची इकोनॉमिक्स रो मेन पर्पस हैला. इकोनॉमिक्स इमती देखियार अछि कि एवरेज ह्यूमन बीइंग कोन क्रेव करछ कोन से चाहछ सेडा देखिया पड़े. सो दैट्स द स्कैरसिटी डेफिनेशन. बुझी पालो ना. देन आसी हमरो ग्रोथ डेफिनेशन. ग्रोथ डेफिनेशन रे से कोन कहूची इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ men and society choose with or without the use of money
to employ the scarce productive resources that would have alternative uses to produce various commodities over time for distributing them for consumption now or in future among the various persons and groups in the society. It analyzes the cost and benefit of improving pattern of resources allocation. जिनस कौन ग्रोथ हेबा पई देखो समस्त पाखरे सेम रिसोर्सेस अछि इंडिविजुअली तुम एग्जांपल मु कहूची देखो समस्त पाखरे सेम रिसोर्स अछि समस्त पाखरे से सेम स्टडी मटेरियल अछि समस्त पाखरे माने यूट्यूब भी अछि हैला हम कोन मेमोरी पावर भी सेतिया देइछने भगवान आमे किंदी यूज करिया सेडा ऊपर डिपेंड करछि तो ग्रोथ डेफिनेशन भी कोन होची जहां भी सोसाइटी तुमको रिसोर्सेस दोची सेडा ऑलवेज सेम आगा थाउची इट्स एज्यूम दैट एवरी इंडिविजुअल इज गेटिंग इक्वल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस बट से जिंसटा को धरे कि तमे लाइफ रे केमते ग्रो करछो माने इकोनॉमिक सेंस रे ग्रोथ होची कोन मनी केमते अर्न करछो बेसी रिच केंदी होचो बट आमो सेंस रे कोन आमे केंदी रैंक आणछो बुझला इंटर हो फाइनल हो जहां भी हो आमे केंदी रैंक आणछो केते भलो पैकेज केंदी अचीव करछो प्रोवाइडेड समस्त से सेम रिसोर्सेस अछि समस्त से गोटे क्वेश्चन पेपर अछि इमती थाई कि भी व्हाट आर बी अचीविंग हैला ग्रोथ डेफिनेशन ता सेडा कोच डेफिनेशन ता हमो पोटा में इंप्लाई करिकि देखिया ना हैला ग्रोथ डेफिनेशन कोन कोची अवेलेबल रिसोर्सेस रे एलोकेशन करिकि किमती हमें ग्रो करि पारि बुझिला सो दिस आर द डेफिनेशंस कोन आस्कियो सेडा मु कहि देली क्वेश्चन एग्जाम रे सेडा हमें डिस्कस करलो ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच रे देखो बेसिक पॉइंट्स खाली अंडरलाइन करिया ट्रेडिशनल अप्रोच रे स्टडीज मैन्स बिहेवियर एज अ रेशनल सोशल बीइंग आ कोन कंसीडर करियो साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर से दीडा जा पॉइंट दबो पतमो आइडेंटिफाई करियो पड़ियो कि सेडा ट्रेडिशनल की मॉडर्न अप्रोच अच्छा मॉडर्न अप्रोच रे अंडरलाइन करो एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स ट्रेडिशनल अप्रोच रे कोन होतिला जनरली कोन जहां किछि भी प्रॉब्लम और इश्यू होची सेटा एड्रेस करा जाउची बट मॉडर्न अप्रोच रे कोन कोची से पॉलिसी मेजर्स भी सब माने सजेस्ट करछि कि केमती हमें इंप्रूव करि परिया कि केमती ए प्रॉब्लम ना कोन हमें ओवरकम करि परिया तापर अंडरलाइन करियो इट्स बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस अच्छा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच रे खाली एतिगागा पॉइंट्स रेलेवेंट आपन को कौन कहला नॉर्मेटिव वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव पॉजिटिव इन द सेंस कोन सबले कोन वेल्थ डेफिनेशन जहां भी अछि वी आर ऑलवेज कंसीडरिंग इट एज पॉजिटिव काहेकि पैसा समस्त दरकार इट्स ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव सेंस बट नॉर्मेटिव माने कोन जानछ ना एवरेज लोकानो कोन को साइंस से इंप्लाई होछ बुझिला वेलफेयर डेफिनेशन जहां भी से कहूची इमती नाही कि समस्तंकर अल्टीमेट इंटेंशन इज वेल्थ इमती नाही बट वेलफेयर एंड कोन ग्रोथ डेफिनेशन दा समस्तंको निहाती दरकार समस्त सेडा बाध्य होइगी इंप्लाई करियाडा बहुत दरकार तो से सेडा नॉर्मेटिव कहूची माने इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी यू कैन अंडरलाइन एंड राइट नॉर्मेटिव माने कोन नॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी तापर देखो द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो वे इंट्रोड्यूस्ड बाय रैग्नर फ्रिस्ट अंडरलाइन कर दियो ए फर्स्ट यूनिट जहां भी अछि इट्स फुल ऑफ बिट क्वेश्चंस तमरा फर्स्ट यूनिट भीतर जेति की बिट क्वेश्चंस हे पारियो मे बी आउ तीनडा यूनिट मिसे लेले एते क्वेश्चंस आसियोन यू हैव टू बी डीप इनफ आ बाकी जहां भी तमरा यूनिट्स अछि फॉर एग्जांपल पेस्टल अछि सेतिर कोन आउ कोन अछि पेस्टल भीतर स्वॉट एनालिसिस अछि वी हैव ऑल दोस थिंग्स सेटा खाली कोन 2-3 पेजेस रे हमें पूरा चार्ट ड्रा करी कंप्लीट करि परिया but for the first unit you have to go through completely काहेकि से डेफिनेशन पछाची ना जगह आइडेंटिफाई करिया चाहची बुझिला ना तो माइक्रो इज derived from the greek word micro सेटा अंडरलाइन करो I'll ask you to underline only the relevant things ठीक है अंडरलाइन करो the word micro is derived from the greek word micros हैला एटा के देछि रैग्नर फ्रिस्ट सेति की अंडरलाइन करियो अच्छा तुमको ऑलरेडी मु लिखि देछि माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन सेथिरो अगर मु कहली कोन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आसियो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कोन कोजे देखो अगेन से गुटे जिंस कोछि इंडिविजुअल को देखि कि हमें जतोड़ इकोनॉमिक्स ता स्टडी करछु whenever economics is studied from the point of view of an each individual it's called microeconomics
बट व्हेनेवर इकोनॉमिक्स इज स्टडीड एज अ होल गोटे कंट्री किंबा इकोनॉमी को धरिकी जते एज अ होल स्टडी करछो दैट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक अछि टिके डिटेल देखो underline please underline particular firm household individual prices wages incomes individuals industries particular commodities ए सब जा कोन एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन भी कहि पारे आमे किंबा माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहि पारिबा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली कोन बुझेबा हमहु how the price of a good is determined how the price of a good is determined से कोन कहछि गुटे इंडिविजुअल कमोडिटी रो प्राइस किंदी डिटरमाइन होई परियो किंबा how the price per unit of factors of production is determined मु अगेन से गुटे जिंस कहछि इंडिविजुअल सेंस इंडिविजुअल कमोडिटी इंडिविजुअल पर्सन इंडिविजुअल लेबरर जहां भी इंडिविजुअल पड़ा आछि इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन गुटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अछि एडी प्राइस थ्योरी तमो क्वेश्चन एडा आई थिंक 2 एग्जाम्स बैक तमो गुटे क्वेश्चन पचर आइतला कोन प्राइस थ्योरी इज आल्सो नोन एज price theory is also known as microeconomics is also known as price theory is also known as what microeconomics हला बहुत important question डायडा please mark it important then आसे हमरा देखो scope of microeconomics हला एडा रो हमो कोन बेसिक किछि क्वेश्चन आसेनी we have to be precise about it so तीनटा फैक्टर से कहूची माने आमे जानिया कोन माइक्रोइकोनॉमिक्स हम पढुछु कोन पे बुझिला ना से कहला कोन ना गुटे इंडिविजुअल किबा गुटे कमोडिटी किबा गुटे गुड्स रो प्राइस करिया पे सो हमर ड्यूटी नै कि प्राइस करियारो सो व्हाट्स द स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स व्हाट्स द यूज ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स सेडा में देखिया ठीक अछि तीनटा जिंस थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग गुटे इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्राइसिंग दा किमिति हे पारिबो ऑब्वियसली तमेला आराम से कहि परियो इकोनॉमिक्स न पढलेले कि हेले कहि परियो जदी मनर मो गुटे कोन गुटे फोन ना आनुछि गुटे फोन ना लॉन्च करछि हैला से फोन रो प्राइसिंग ना को जिंस को धरि के हे पारियो डिमांड एंड सप्लाई को जिंस को धरि हे पारियो डिमांड एंड सप्लाई एग्जैक्टली से टाइप रो फोन केतरा ऑब्वियसली अवेलेबल अछि एंड आमे जो प्रकार फोन आनछो से फोन रो एग्जैक्ट डिमांड कोन से दीटा जिंस को धरि के आगा हमें कोन कर पेले से फोन रो प्राइसिंग करि पारिया ठीक अछि से सेडा आगा कहूची कोन ना गुटे प्रोडक्ट रो जेतला हमें प्राइस करछु हमो को दीटा फैक्टर्स दरकार ना डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस बुझला डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट वी आर लॉन्चिंग जहां किछ भी प्रोडक्ट हमें लॉन्च करछु से प्रोडक्ट रो डिमांड केते अछि मार्केट भितरे एंड सेम सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट रो कोन सप्लाई केति के अवेलेबल अछि से दीटा जिंस को धरि कोन हमें प्रोडक्ट रो प्राइस करि परिबा देन फैक्टर प्राइसिंग अच्छा मते एबे कहयो रेंट ता को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पई लैंड आ वेजेस ता लेबरर इंटरेस्ट इज फॉर कैपिटल किंबा जहां भी मशीनरी हमें आनो लोन देगिरी से जिंस पे प्रॉफिट इज फॉर ओनर और एंटरप्रेन्योर बुझला they'll ask you this basic questions theory of economic welfare अच्छा आउडे कोन obviously on the whole न देखिले गोटे इंडिविजुअल रो वेलफेयर देखिला अलगो आमे कोन जिंस कंसीडर करिया एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन कंजम्पशन ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी अच्छा आमे कंजम्पशन जहां भी माने गोटे प्रोड्यूसर आई मीन गोटे कंज्यूमर कंजम्पशन जेतोला हमें एम करचो आमे कोन को लेवल रो सेडा प्लान करिया ना प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करिया आगु आगे में प्लान करिया ना नै माने जिंस कोन मु कहया चाहूची मनर आमे गोटे प्रोडक्ट बने देछु ता परे जदी आमे देखिया कि कंज्यूमर को सेडा भल लागियो ना नै तो आमो मनर खर्च बेसी बढ़ी जिवो बट फर्स्ट आगे आमे जाय कि रिसर्च करिया कि कंज्यूमर को कोन इच्छा ता हिसाब रे जदी आमे बनेबा तो आम कोन गोटे ग्यारंटी रहबो नंबर 1 गोटे ग्यारंटी रहयो कोन से कंज्यूमर को सेडा सैटिस्फैक्शन दबोली आउट जिंस कोन प्राइस भी हमको ऑब्वियसली कम लागिवो तो से कोन कहूची एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी तीनटा जगह जिंस आराम से अचीवेबल विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स बुझला सो मो थर्ड पॉइंट रे क्वेश्चन केमती आसीबो तमो ए तीनटा जा पॉइंट से कहयो कहिगिरी को जिंस रे एडा अचीवेबल तमो पचरियो को जिंस रे अचीवेबल ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स रागा अचीवेबल तो क्वेश्चन पैटर्न ना बुझो जतलो तुम पढुचो तो ईच इंडिविजुअल जतलो आमे थ्योरी एते डिटेल पढिया दरकार नै बट जिमती पढियार अछि जिंदगी गुटे क्वेश्चन से पॉइंट रो आसीले भी जिमती बुलेगी से देलेले तमे आंसर करि परला ठीक अछि यूजेस और सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी डिस्कस करलो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो
मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हेची मैक्रोस रु हैला एग्जांपल से कहछि देखो नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट टोटल आउटपुट टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल कंजम्पशन एक्सेट्रा आ मैक्रो इकोनॉमिक्स रो डेफिनेशन टा किए देछि गार्डनर एटली प्लीज अंडरलाइन गार्डनर एटली एटा कोन गार्नियर एक्ने प्रोडक्ट रे ओडे लाउछि नै गार्डनर एटली तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट द नेशनल इनकम हैला ऑन द होल जहा किछि भी नेशन बेसिस रे जा किछि भी हबो एडा ए भितर आसियो इट आल्सो डील्स विथ देखो theories of economic growth and macro theory of distribution. It's also called as income and employment theory. Income and employment theory. बुझिला तमे एडा भूली जेबो ऊपर लिखि दियो macroeconomics रो पाखरे हिंदी macroeconomics is also known as income and employment theory आ सेडा कोन थिला प्राइसिंग theory ठीक अछि macroeconomics is also known as income and employment theory देखो स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स भितरे कोन जेतलो गुडे नेशन बेसिस रे आछि त हमको कोन चारटा जिंस से इलैबोरेट करिकि कहछि गुटे होछि थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जेतलो गुडे इंडिविजुअल अछि 10टा इंडिविजुअल मिसिले गुटे ये हे पारे गुडे डिस्ट्रिक्ट बेसिस रे हे पारे 10टा इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर मिसिले आ कोन गुटे 10टा स्टेट किबा 20 स्टेट्स मिसिले कोन नेशन वाइज स्टडी दा हमरो इजी हे पारियो तो ईच इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन करले कोन सेडा माइक्रो बट केतेडा माने सम ऑफ डिफरेंट माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशंस कैन लीड टू मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन तो हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स भितरे बेसिक से कहछि ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट ता कंट्री रे कोन एम्प्लॉयमेंट चलछि ट्रेड साइकिल्स माने बिजनेस केमती चलछि थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन माने कोन जहां किछि भी हां रेट केमती बढ़ियो प्राइस केमती बढ़ियो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ माने ग्रोथ केमती हे पारे इकोनॉमी भितरे एंड माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एति कि जिंस हमरा आछि कोन मैक्रो इकोनॉमिक्स भितरे अच्छा इकोनॉमिक साइंस ना आर्ट्स सेडा में देखिया इट्स बोथ साइंस एंड आर्ट्स हमें जान से जिंसडा साइंस कोन पे तमो ए जिंसडा कोन पे इंपोर्टेंट ऑब्वियसली केएल कोन पे पाठ पढियो रे एग्जाम देबा पे पढियो ठीक अछि एग्जाम रे कोन से पचाछि हैला कोन पे तमो इकोनॉमिक साइंस लाछि आर्ट्स लाछि से किछेले ताको फरक पड़नी बट साइंस लाग्या पे रीजंस कोन से पचाछि हैला प्लीज अंडरलाइन इट ट्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट कॉज कोन इफेक्ट कोन से दीडा जिंसर रिलेशनशिप टा बुझेबो दैट्स व्हाई इट ट्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट देन आछि हमर कोन सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स जहां कुछ भी इंडिविजुअल फैक्ट्स अछि तारा एनालिसिस करियो दैट्स व्हाई मेकिंग जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स माने कोन जहां कुछ भी लॉ अछि थ्योरी अछि रूल्स एंड रेगुलेशंस अछि सेडा से कोन आम टर्म से सेडा इजीली बुझेबो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड साइंस देन आछि कोन टेस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस से गोटे थ्योरेटिकल जिंस एमती कहबोनी से कोन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स नेगिरी हमको इलैबोरेट करबो एडा होची कोन साइंस है बड़ा रीजन साइंस माने इकोनॉमिक्स तो साइंस कोन पे कहउछन्ते तार सब रीजंस देन आछि कोन हमरा आर्ट्स Keynes defines art as system of rules that attain for the attainment of a given end तो रूल्स कोन पे कुआ होची ना जहां किछ भी हमर पॉलिसीज दिया अछि माने आमो को आछि रैंक आनियार अछि जेमतेले कोन रैंक आनियार अछि सेडा होची इंटेंशन बट द वे इन व्हिच वी विल गेट द रैंक इज आर्ट्स रैंक आनियार अछि इज अ पॉलिसी सेडा होची साइंस बट द वे इन व्हिच वी विल गेट द रैंक आमे रैंक ता किन जानिबा दैट्स द आर्ट ऑफ डूइंग इट दैट्स द आर्ट ऑफ डूइंग इट difference between science and art किछि नै theoretical practical how it मुझे जो point हम कहली सेटा सेकंड रे अछि देखो science teaches us to know and art teaches us to do कोडी पडला पोतल है देखो पॉजिटिव साइंस देखो
explains what is but not what ought to be. से गुट्टा लाइन अंडरलाइन करो गुड थोड़ी केतला आस्थिला क्वेश्चन ना. The positive science explains what is but not what ought to be. माने को जिंसडा हम करियर अछि सेडा कहियो बट को जिंसडा करियर नै सेडा से कहियो हैला. And normative science होचे what ought to be and what not ought to be. It deals with both good and bad or right and wrong. हैला धीरे जा जिंस कहबो. That's the only thing you need here. अब बेसी किछि दरकार नै. अच्छा एडा गुटे अंडरलाइन करो. Deductive method is a static analysis and inductive method is dynamic. Deductive method and inductive method टा माने से देखो टिके बुलेला क्वेश्चन पचारे रछेली कहले से क्वेश्चन भितर आगा पचारियो बट वी आर नॉट इवन रिस्किंग 1 मार्क माने 2 मार्क्स ऑब्वियसली 2 मार्क्स भी हमें रिस्क करूनु. तो डिडक्टिव मेथड माने कोन ई गुडे लाइन रे कहि दोची जनरली हम गुडे 10 टा ऑप्शन दिया अछि हमें चूज केमती करछु सेडा को जनरली किन करछु एवरेज पकोछु. एवरेज पकेले कोन माने आमो हिसाब रे कोन ठीक मे बी हमें फ्रेंड्स को पचारु मे बी फैमिली को पचारियो मे बी टीचर को पचारियो आमो इच्छा सेडा पचारि कोन गुडे स्टैटिस्टिक्स पकोछु ना नै कि एतिके हेले ठीक हे परियो एतिके हेले रॉन्ग हे परियो तापर हम निजर नॉलेज रे इम्प्लाई करछु. दैट्स डिडक्टिव मेथड. दैट्स डिडक्टिव मेथड माने कोन हमें स्टैटिस्टिक्स माने परसेंटेज पकेला रेटिंग पकेला परे हमें निजे कोन एलिमिनेट करछु रैंक करछु 1 2 3 रैंक करछु थर्ड नंबर टा डिलीट करछु 1 और 2 भितरे कोन ठीक हे पारियो कोडा बेटर हे पारियो सेला हमें चूज करछु. सो दैट्स डिडक्टिव मेथड. बट इंडक्टिव मेथड माने कोन इंडिविजुअली तमे तम डिसीजन मेकिंग दा चेंज करियो. मनर गोटे होटल को गलो हैला तमे आगुडो सेडी कोन खाइचो सेडी चाउमिन भल लागे तमे जानचो तो सेडी चाउमिन बेसी रेट थिले ले तमे न जाई कि मेन्यू न देखि कि चाउमिन ऑर्डर कर देलो बट आउडे जागो तमे जिवो एली कहले तमरो चाउमिन फेवरेट भी हो बट कोन आ कोन आइटम्स होचे सेडा चेक करबो. सो योर डिसीजन मेकिंग इज कंप्लीटली डायनामिक हियर. किमिते डायनामिक ना डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो सिचुएशन को धरि कि जेतलो तमे कोन डिसीजन मेकिंग दा चेंज करचो दैट्स कॉल्ड इंडक्टिव मेथड. तो डायनामिक माने कोन चेंजिंग अपॉन द सिचुएशन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. एडा गुथरे क्वेश्चन आस्थिला आ कोन नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस रो क्वेश्चन आस्थिला. So what you people are supposed to do is मु जहा किछि भी कहूची you have to write it down separately लिखि कि रखिबो कोन पे ना हमको पूरा जिंसडा अथरे पुनी पढियो दरकार नै वेलफेयर वेल्थ एते जा जिंस पढियो दरकार नै वटा भी माने कोन पचार एग्जाम रे डेफिनेशन किए देछि जस्ट कोन हैला आ नॉर्मेटिव साइंस रो मीनिंग कोन कोडा साइंस कोडा आर्ट्स कोन पे साइंस को आछि बुझला नै एतिया से पचार. अच्छा एबे आछि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स. Central problem of all economics. तीनटा जिंस एवरी इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम्स. सब इकोनॉमी कोन तीन प्रकार प्रॉब्लम फेस करियो. व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. अच्छा आमे निजे एबे डिस्कस करिया एडा किमती सॉल्व हे परियो. व्हाट टू प्रोड्यूस for whom to produce. ठीक अछि what to produce how to produce and for whom to produce. अच्छा तमे गोटे इंडिविजुअल कोन सेलर गोटे कोन बिजनेस स्टार्ट करियो चाहछो को सेक्टर रे सारा डिपेंड करियो को सेक्टर हे पारियो. आई एम आस्किंग यू पीपल कोड सेक्टर को जोडले कि तमे बिजनेस स्टार्ट करियो चाहछो. फूड इंडस्ट्री फाइन वेरी गुड फूड इंडस्ट्री. सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ फूड इंडस्ट्री. एबे आमे हिंदी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी देखिया. What to produce कौन प्रोड्यूस करिया हमें कॉफी फाइन राइटिंग कॉफी. How to produce coffee beans रो obviously coffee beans रो but what suits the consumer हैला हमें कोन ए जिंसडा जानिया पे कोन कंज्यूमर ऊपर डिपेंड करिया कंज्यूमर डिपेंडेंसी बट हमर इंडिविजुअली भी केतडा आइडिया रहि पारियो. For whom to produce consumers ठीक अछि वेरी गुड consumers
बट से कंज्यूमर्स किए ऑब्वियसली बुढ़ा बड़ा लोक नथिए कॉफी इज फॉर यंगस्टर्स ठीक अछि टीनेजर्स तो आमे ए कंज्यूमर्स पार्ट को आसिला आडगो कोन चेष्टा करिया जानिया पई ना हु आर द एक्चुअल कंज्यूमर्स माने आमे जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करछु हु वुड बी आर कंज्यूमर्स के हे पारियो टीनेजर्स ऑब्वियसली टीनेजर्स मैक्सिमम थिबे आ कोन कॉलेज गोइंग पीपल टीनेजर्स भितर भी जतरा आमे क्लासिफाई करछु कॉलेज गोइंग पीपल स्कूल रेला होनी ओके ऑफिस ऑफिशियल्स आ कोन हे पारियो जे जॉगिंग करची हला एक्सरसाइज एंथुसियास्ट जे भी अछंदी हला जिम पीपल वेरी गुड एक्सरसाइज एंथुसियास्ट या कपल्स ऑब्वियसली नो नो सेडा तो बहुत माने बड़ जिनसडा आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस ठीक अछि आमे जो आइटम ता सिलेक्ट करछु कॉफी ठीक अछि ना सेडा कोन आमे जतडो को चेष्टा करछु हमर कंज्यूमर के जानिया पई देन ओनली वी कैन प्लान दिस ऑब्वियसली अच्छा कॉफी तो से कहला कॉफी बीन रो हबो हैला ब्रू कॉफी हो को कॉफी बीन रो हबो बट हाउ वुड आवर प्रोडक्ट बी मैचिंग टू द सोसाइटी हमरा सोसाइटी को माने हम प्रोडक्ट किन मैच करि पारछु डिमांड किन मैच करछु सेडा जानिया पे कोन हमर कंज्यूमर्स के हमें जानलो कंज्यूमर्स के जानलो एबे हमें जानिया कोन हाउ टू प्रोड्यूस अच्छा हाउ टू प्रोड्यूस ना कंज्यूमर माने को माने कोन डिमांड थाउछ जनरली टीनेजर्स की कॉलेज गोइंग पीपल की से माने कोन माने डिमांड कोन करचंदी कैपुचिनो ऑब्वियसली हैला आउडे कोन से कोन स्वान की जहा किछ भी डिजाइनर वाला कॉफी ओडा आछी वेराइटी फ्लेवर्स रो जहा भी आछी एंड जे ऑफिशियल पीपल अछंदी जे ऑफिशियल पीपल अछंदी से माने कोन ना नॉर्मल वाला कॉफी हां एते यात्रा कॉफी न थाई कि फिल्टर कॉफी तांके कोन यूज करे एंड जिम एंथुसियास्ट जे भी अछंदी तांके black coffee without sugar wala coffee so obviously we have got an answer of how to produce kon produce kariya ki kemiti produce kariya what to produce kon obviously ame janchu seda coffee so coffee bhitare consumer dependency को धरी गिरी का पे produce करिया देखि गिरी ame kon गोटे list ता produce करिवा this is our actual list कि ame kon produce करिया तो एमिति ame central problem of economy टा kon solve करि परिबा देखो से कौन कहछि due to scarcity of resources every economy faces problem the central problem of all economies are explained as follows what to produce how to produce and for whom to produce what to produce kona on the basis of requirements of the society on the basis of requirements of the society further if the present is given importance of the resource are diverted for the production of consumer goods if future is given importance the resource diverted for the production of capital goods acha ए तळे मो आडे चार्ट लेखो छी प्लीज राइट एडिया का कंटिन्यू कर देबा एडी लेखो what to produce on the basis of requirements on the basis of requirements of the society जहा किछि भी सोसाइटी रो रिक्वायरमेंट्स अछि आमे जदी ताकू धरि की प्लान करि पारछु देन ओनली वी कैन अचीव गुड प्रॉफिट then how to produce dekho this problem is arising because of the unavailability of some resources a country may produce by labor intensive technique or capital intensive technique depending upon its manpower and stock of capital अच्छा एडी मो आउट जिंस लेखु छ देखो ए रिक्वायरमेंट्स जहा किछि भी से कहिछि आमे सेडा फर्दर क्लासिफाई करछु प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रेजेंट एंड फ्यूचर भितरे से दीडा जिंस कहिछि देखो फ्यूचर को जदी हमें माने इंपोर्टेंस दोचु तो हमें कोन प्रोड्यूस करिया कैपिटल गुड्स एंड प्रेजेंट को जतळो हमें इंपोर्टेंस दोचु हमें कोन प्रोड्यूस करिया कंज्यूमर गुड्स एटार मीनिंग मु बुझौछि तम क्वेश्चन आसिले ए पार्ट रो आसी जदी ए पार्ट को पचाचिसी कैपिटल गुड्स वेरी बेसिक थिंग देखो जदी मनरो तमे चाहो छ गोटे बिजनेस करिया पई बट से बिजनेस जहां किछि भी अछि
तमे कोन प्रेजेंट ओरिएंटेड माने मते इमीडिएटली प्रॉफिट दरकार इमीडिएटली सेल्स दरकार प्रेजेंट टर्म्स को देखि मु गोडे कोन बिजनेस करिया चाहूची तो से टर्म रे तमे कोन करियो कंज्यूमर गुड्स करियो माने कोन बेसिक कंज्यूमर नीड्स जहां भी फुलफिल हे पाया राइस व्हीट फ्लोर ब्रेड बटर हैला जहां किछ भी कोन बेसिक आइटम उडारो बिजनेस करि परियो आ फ्यूचर ओरिएंटेड जतळे तमे रहउछो तमे कोन कैपिटल गुड्स करि परियो माने कोन मशीनरी एसी फ्रिज टीवी जहां भी सेटा कोन फ्यूचर ओरिएंटेड हेले माने तमे जगी पारिबो प्रॉफिट अर्न करिया पे तो जेतळे तमे फ्यूचर ओरिएंटेड होचो यू विल प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स बट प्रेजेंट ओरिएंटेड हेले कंज्यूमर गुड्स ठीक अछि लेखिले एटा देन देखो हाउ टू प्रोड्यूस रे से कहूची अ कंट्री में प्रोड्यूस बाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लिखो लेबर इंटेंसिव and capital intensive when laborers are highly available when laborers are not freely available ठीक अछि जेतले हम लेबरर्स इजीली अवेलेबल हो चंदी हमें कोन लेबर इंटेंसिव टेक्निक ता अडॉप्ट करले भी चलियो बट व्हेनेवर लेबरर्स आर नॉट गेट आई मीन नॉट अवेलेबल फ्रीली को टेक्निक अडॉप्ट करिया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक तो लास्ट पॉइंट देखो फॉर होम टू प्रोड्यूस कहां पे प्रोड्यूस करिया सेडा को जिंस डिटरमाइन करिया गवर्नमेंट पॉलिसी फर्स्ट थिंग अंडरलाइन करो गवर्नमेंट पॉलिसी one can make a conjecture for the pattern of production of the country. If the government decides to produce more ordinary buses than luxury cars, then one can understand that the country is producing for the poor and not for the rich. अच्छा तो मैं एडी गुटे जिनसे लिखि पारियो गवर्नमेंट डिसाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज से गवर्नमेंट पॉलिसीज भितरे लग्जरी गुड्स एंड ordinary goods जदि लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करिया पे तार पॉलिसी कहूची तो रिच क्लास ओरिएंटेड जदि ऑर्डिनरी गुड्स देन मिडिल और पुअर सेक्शन बुझला हमें किमती आइडेंटिफाई कर परिया हम को सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री को टारगेट करिया पे गवर्नमेंट कहूची ना जदि लग्जरी गुड्स पे तारा इंपोर्टेंस अछि देन रिच क्लास ओरिएंटेड जदि ऑर्डिनरी गुड्स पे अछि देन मिडिल क्लास ओरिएंटेड बुझि पाले पिलाने ठीक अछि सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कौन डिस्कस करिया यूटिलिटी वेल्थ एंड प्रोटेक्शन थैंक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज